So we were doing algorithm binary searching in last class, and we have done this concept. So I'm repeating again. Shortness को revise करते हैं. See, in this binary searching, the first condition that your data should be arranged in either ascending or descending order. That is your first condition. So linear searching में we don't require that type of condition that your data should be arranged. So here your data should be arranged either in ascending or descending. तो यहाँ पर data जो है वो ascending order में arrange किया है. And here the data name is A. वैसे हम लोग algorithm में data का नाम जो array का नाम है that name we were taking data. Okay. So this is your data which we have arranged in ascending order. So first you need to locate the midpoint. The midpoint, how to locate with the help of this formula. This is your formula of beginning plus end. Beginning is the first location, end is the last location of your element. So if you do this, then 0 plus 8 divided by 2. So 4. 4 is your midpoint. Okay? So you have to see the data available at the midpoint, and you have to compare with the search data. This search data which you need to search in this. The 23 is list में है कि नहीं है. So midpoint data you have to compare with the search data. If your midpoint data is greater than your search data, so your search should be in second half. And same way, if your this data is less than this data, then your search should be in first half. Then you need not to compare with these elements. So in our case, our data which we need to search is 23, which is greater than this mid value. So we will search in second half. So when we will search in second half, so our new list will start from this place. So my beginning will change. Okay. So जब हम next searching करेंगे, so my beginning will be equals to mid plus 1. This is my beginning. My beginning will be equals to mid plus 1. तो मेरा mid क्या था 4 and mid plus 1 is now 5. तो मेरा जो next searching होगा वो between 5 to 8 के बीच में होगा. So for that again we need to locate a midpoint. So midpoint कैसे निकालेंगे? Again beginning plus 8. Here the beginning is now 5 and end is now 8. So this will be your 5 plus 8 कितना हो जाएगा? 13. And 13 divided by 2 you will get 6.5. You have to take integer value. So 6 is your midpoint. So this is your midpoint. Okay. And in this midpoint again you will have to compare with this search item. If it is still greater than this, so your search will be in this area. Means your again beginning will change. And beginning क्या है? Mid plus 1. अगर आपका सर्च फर्स्ट हाफ में जाएगा तो एंड विल चेंज. और एंड कैसे बनेगा? मिड माइनस 1. ओके. So this way again you will have to search. So again your beginning is now 6 and end is now 8. तो 8 plus 16 हो जाएगा आपका this one. Sorry, 7 plus 8 ये हो जाएगा. So that will be 15. So 15 divided by 2 again it is 7.5, but you have to take integer value. So 7 is your midpoint. Now अब आपको देखना है ये वाला value now it is matching with this. So 7 is your location where data is there. तो यही concept हमने algorithm में करना है. बार बार वही चीज repeat करनी है. कब तक? What will be your repeat condition? Right? जब तक कि data of mid should not be equals to your searched item. जब तक आपका data at mid और searched item same नहीं हो जाते, तब तक आपको compare करना है. And the second thing कि अगर मैं इधर 25 ढूंढ रही होती तो 25 is not there in the list. तो वो चलता ही रहेगा. कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आप लास्ट सिंगल सेट when beginning is not equals to end. जब तक एक ही सेल पे नहीं पहुंच जाओ, बिगनिंग और एंड एक ही सेल, एक ही नोड हो जाए, एक ही एलिमेंट रह जाए, उस तब तक we need to search. तो ये दो कंडीशन आपको रिपीट में डालनी पड़ेगी. they repeat while beginning is not equals to end and the data at mid is not equals to your searched item, which is there in item variable in your algorithm. You can see here in this
योर सर्च एल्गोरिथम. सो देखो आपका फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका यहाँ तक कि beginning should be initialized to lower bound first element and should be initialized to upper bound last element. And how to find beginning? Beginning you are finding with the help of beginning, mid you are finding with the help of beginning plus n divided by 2. And you are taking integer value. You are not taking, you cannot take decimal value. So that you need to initialize. After that you have to repeat these two steps, step 3 and step 4. कब तक? जब तक beginning end मतलब एक सेल ना रह जाए and data of mid is not equals to item. जब आपकी जो data of mid की जो value है वो आपकी search item, आपका यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर है? आइटम में. तो जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते या जब अगर वो डेटा है ही नहीं तो ये कंडीशन तो चलती ही रहेगी दैट बिगनिंग इज नॉट इक्वल्स टू एंड. आप लास्ट तक पहुंच जाओ. ठीक है, तो ये कौन से दो स्टेप्स रिपीट करने हैं? थर्ड एंड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? यू नीड टू कंपेयर योर सर्च आइटम विद योर डेटा आइटम. ठीक है, कि जो आइटम जो सर्च कर रहे हो वो डेटा आइटम से छोटा है या बड़ा है. अगर वो उससे छोटा है तो योर सर्च विल बी इन फर्स्ट हाफ, तो योर एंड विल चेंज, एल्स योर बिगनिंग विल चेंज. हम यही कर रहे थे ना यहाँ पर कि अगर ये जो है डेटा ये दिस 13 इज ग्रेटर देन 23 तो इट इज गोइंग इन सेकेंड हाफ. बट इफ अगर मैं 12 या कुछ 6 ढूंढ रही होती या 5 ढूंढ रही होती तो ये फर्स्ट हाफ में होता तो एंड चेंज होगा. अगर सेकेंड हाफ में जाएगा तो बिगिनिंग विल गोइंग टू चेंज, राइट. सो ये हम यहाँ पर वही कंडीशन देख रहे हैं कि इफ योर डेटा आइटम सर्च आइटम is less than your mid value, then your end will change, otherwise beginning will change. Understood? और फिर सेम उसी में फोर्थ स्टेप क्या रिपीट करना है? यू हैव टू अगेन सेट द मिड वैल्यू फॉर न्यू एरे. ठीक है ना, हर बार जो नया एरा इफ योर सर्च इज गोइंग इन सेकेंड हाफ so your beginning will change, so your new next mid value will be different because you have changed your beginning. So here again you have to change the beginning value, sorry, mid value with the help of same formula. So these two steps you need to repeat till these two conditions are not till these two conditions are satisfied. अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपकी satisfied हो जाती है तो आपका वो डेटा स्टॉप हो जाएगा. तो यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा. तो हमें लोकेशन कैसे मिलेगी? अगर डेटा ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम आ जाता है जैसे हमारे पुराने लास्ट एग्जाम्पल में था, यहाँ पर ये यहाँ सर्च करके डेटा ऑफ मिड वैल्यू आपके सर्च आइटम से मैच हो गई. तो अगर वो मैच हो जाती है तो ये दिस 7 इज योर आंसर, दैट इज योर LOC लोकेशन. सो योर मिड इज योर लोकेशन. यहाँ मिड पे आया ना ये वैल्यू 23 दैट नाउ डेटा एट मिड और आइटम बोथ आर इक्वल. डेटा एट मिड और आइटम इफ दे आर इक्वल देन योर लोकेशन विल बी मिड. और अगर लास्ट तक नहीं मिलता आप ढूंढते ही रह जाते हो और इफ दैट value is not there in your list then you have to say that location is not found, it is equals to clear. This is clear now that searching may you have to search the midpoint. First midpoint if you are search if it is and the data at midpoint you have to compare with the searched item. If searched item is greater than your data at mid then your search will be in second half and your beginning is going to change. And if your data mid is your जो सर्च आइटम है if it is less than your data of mid value then your search will be in first half and your end is going to be change. So this step you have to repeat again and again and every time your mid value will be according to the new beginning and end. That all these two steps you need to repeat. और कब तक रिपीट करने हैं? जब तक कि आप लास्ट सेल तक ना पहुंच जाओ. अगर डेटा नहीं होगा तो आप लास्ट सेल तक पहुंचोगे या फिर जो डेटा ऑफ मिड वैल्यू है इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू आइटम. जब तक सर्च आइटम और डेटा मिड वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती तब तक आपको इसमें यू नीड टू सर्च. एंड आफ्टर सर्चिंग अगर डेटा ऑफ मिड ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो लोकेशन, जिस लोकेशन पे डेटा मिड है, मतलब जो मिड वैल्यू है, इट इज योर आंसर। और अगर ये वाली वैल्यूज ट्रू हो जाती है कि बिगनिंग इज नॉट इक्वल टू एंड, तो योर लोकेशन इज नल। अंडरस्टूड? तो ये आपका बाइनरी सर्चिंग। सो वी हैव डन ऑल दी एल्गोरिथम। तो हमारे कितने एल्गोरिथम थे? we did 6 algorithm: traversing, insertion, deletion, then sorting, bubble sorting, and 2 algorithm for based on for searching, एक linear search था and एक binary search। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? तो लीनियर सर्चिंग में सर्चिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट विल गो टिल योर एलिमेंट, जो सर्च एलिमेंट विच यू आर सर्चिंग इज नॉट फाउंड, तब तक आप उसे सर्च करते रहोगे। बट इन बाइनरी सर्चिंग इट बिगिंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। Okay, and in this there is no need to arrange the data, okay, but here the data should be arranged in sorted form. Here for larger size of array this searching is very time consuming, but for larger size of array comparison time is less। तो इसमें जो searching है, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस आई हैव रिटन। वर्स्ट केस में कि आपका जो एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हो, suppose 10 elements का array है and your search item is at the 10th location, so you will be comparing with all 10 elements। तो worst case क्या होगा कि you are comparing with every element of the array, तो n is your worst case। और best case क्या हुआ कि आपका जो सर्च एलिमेंट है वो फर्स्ट लोकेशन पे ही है, तो दैट इज योर बेस्ट। बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्चिंग योर वर्स्ट केस इज लास्ट तक आपका जब सिंगल सेल बचता है तब तक आप सर्च करो, बट वो भी इन लॉगरिथमिक फॉर्म में रहते हैं। इट इज नॉट अ लीनियर सर्च, लॉगरिथमिकली इट इज गुड, सो दैट मेनी कंपैरिजंस यू नीड टू डू। बट इन केस ऑफ बेस्ट केस की फर्स्ट मीटर जो आया वही आपका सर्च आइटम है, दैट इज योर that is your best case। And it here the insertion can be easy, here insertion is easy, why? Because at the end you can insert, so you need not to arrange data, but here in this for insertion it will means you need to maintain your that sequence कि अगर वो डेटा कहीं मिड का है तो आपको फिर से पहले सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो लीनियर सर्चिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप लास्ट में डेटा इंसर्ट कर दो and searching you can start। Understood? So these differences you can write in your board exam. This question is there that write the difference between linear search and binary search. The minimum 3 valid points for 3 marks and 4 valid points for 4 marks you need to write। Okay, so this is all about your algorithm। Now we'll start with small concepts in this chapter. These are very easy concept and direct question is there. What is pointer? How to represent the pointer with the arrays? Yeah, how to represent it is in the memory। So very easy। Now you are familiar with the word array। Array क्या होता है? That is to store same kind of elements, to store same type of data in the array। Now, what do you mean by pointer? So, pointer array means that it's hold the pointer, or we can say it hold the address of the elements in the list। That is your pointer array। हमने थोड़ा सा pointer variables पढ़ा था ना, it always hold the address of the variable। Okay, तो यहाँ पर pointer array का क्या मतलब है? जैसे अभी एक एग्जाम्पल इसमें दिया है जिसमें I have 4 groups: group 1, group 2, group 3 and group 4। In these 4 groups we have different students, or we can say different person। अभी I need to store in the memory। तो जब हम store करते हैं तो we will better take 2 arrays। ठीक है, तो एक array क्या करेगा? It will keep the track of the group starting from which address। Okay, it will keep the track of group starting from which address। So it will store the first address of group 1, then it will store the first address of group 2, then it will store the address of group 3
same way the starting address of group 4. तो इस तरह से we need to maintain two array. One array is a pointer array and the other is the to all the members of these groups. Okay? हम एक ही array में ये सारे नाम स्टोर कर लेंगे. We will store all the names in one array. But how we will differentiate that group 1? If I want to search Yogesh, so I know it is at the group 3. So I directly start searching from group 3. Means I will start from group 8. ठीक है, from sorry location 8, right? तो 8 से मैं स्टार्ट करूँगी तो आई नो इट इज एट द 10th लोकेशन. तो आई कैन इजीली फाइंड. जैसे एक स्टूडेंट का एग्जांपल हो कि if you have 3000 students in a school, I said okay, I want to meet Yogesh. ठीक है, तो which Yogesh? Is he in primary section or is he in secondary section? Is he in playgroup or is in college section? Where is? So we don't know. Or you have so many Yogesh in different classes. So how you will come to know which Yogesh? तो अभी सब स्टूडेंट 3000 स्टूडेंट्स के नाम एक ही लिस्ट में है. तो व्हाट वी विल डू, वी कैन मेक array that based on category. Okay, we have a pre-primary array. मतलब pre-primary के जितने स्टूडेंट है it is starting from 1. Okay, after that second जो primary के स्टूडेंट है they are starting from 501. तो 500 students are there in pre-primary. Then 500 to 1000 students are there in primary, and 1001 student to 2000 are there in secondary. So it is very easy to keep the track of that particular group with the help of pointer array. So understood the concept of. इतना ही आपको इसमें लिखना है. आपको बहुत लैंग्वेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं दिखाने कि आपको C++ में क्या कैसे करना है या कैसे उसको पॉइंट करना है. व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर C++? नो, इट इज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू नीड टू रिप्रेजेंट हाउ pointer array is helpful. The pointer array is helpful to point that particular group, and from that group you can access all the other members of that particular array. So understood this concept, this example that we have taken 4 group, and उसका जो starting address, जैसे अभी first group is starting from 1 and it has 2 elements, Prayas or Nitin. Okay, so second group is starting from group 3, serial number 3. So Swapnil, Amit, Vivek, Ravi, Om Prakash. So these are in group 2. So group 3 is starting from 8 location. So it is starting from this Rajde. Here it is this and here it is this. And then group 4. Okay? Group 4 is starting from location 12. It is from Ch-1. So with the help of this pointer array, it is very easy to keep the track of all the groups which is there in only one area. Understood? Clear? तो ये छोटा सा टॉपिक कई बार एग्जाम में आता है. व्हाट इज पॉइंटर एरे और या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉइंटर एरे. तो इतना ज़्यादा C++ से रिलेटेड यू नीड नॉट टू राइट. यू जस्ट टेक दिस एग्जांपल एंड राइट अबाउट हाउ एंड व्हाट a pointer array is going to store. Clear? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिकॉर्ड. Okay, so how it is different from array? So record is basically collection of relative data item. Okay, हमने रिकॉर्ड देखा था. फर्स्ट जो टॉपिक था हमारे डेटा स्ट्रक्चर का. तो वी हैव डन फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर. व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज एंटिटी, what is record, what is file. So record is basically related data item of which is called each of which called field or attribute. So what is field or attribute? Field is basically where you can assign some values, and attributes is basically the information of that particular entity. Just like employee, I have taken one example. Employee is the entity. एम्प्लॉय का हम रिकॉर्ड बना रहे हैं. जैसे वहाँ पे मैंने लिया था स्टूडेंट का रिकॉर्ड.
So student is the entity or here employee is the entity. So every attribute related to this is called the properties. We have whatever the information we are giving, that is its attribute. So what information we are giving here? What is the name of employee? What is the gender of the employee? Date of birth, address, and phone number. So these are called attributes of that particular entity which is employed here in our case. Understood? What is field? Field is basically the place where you can assign some values to these attributes. Okay? So abhi how it is storing in the memory main thing और how it is different from array. सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये है कि यहाँ पर जो है you can store non-homogeneous data. What do you mean by non-homogeneous data? Homogeneous means same type of data. So array क्या करता है? It can store only same data type. If I declare int I, int integer data type, integer array, so it can store only integer value. But if you can see in record, it is storing character, it is storing some numbers or addresses, some characters, numbers. So it means any different data types we can store in the case of record. So record is a non-homogeneous, it can store non-homogeneous data. Or in record, natural ordering of element is not possible. That is also important. अभी इसमें why natural ordering is not possible, and in array we have natural number. Means first sequence से शुरू करेंगे, जैसे integer और array है तो linear array, तो linear array of 0, 1, 2, 3. So we are having that sequence. Okay, we are having that sequence. But in case of record, natural ordering is not possible because we have group items and we have elementary items. So based on group items और उसके सब elementary items या group item के अंदर we have subgroup, and again subgroup we have one more subgroup, and when in that subgroup we have elementary item, then we have to give different levels to that particular position. Okay, so you are familiar about group items and elementary items. Group items क्या है? Group items which we can divide it into further elementary item, and elementary item which we cannot divide it further. For example, in name. In case of name attribute, it is a group item. It is the example of group item because further you can divide it into three things: first name, middle name, and last name. Right? First name, middle name, and last name. So these are elementary items. Gender is elementary item. Date of birth, it is your group item, which is further divided into elementary item, date, month, year. Address is a group item which can further divide it into two elementary field, city and pin. And phone is your elementary item. तो हमें अब देखना है कि जो एंटिटी है उसको लेवल देते हैं वन. हाउ वी आर गिविंग द लेवल नंबर्स. तो जो एम्प्लॉय है उसको हम, जो एंटिटी है नेम, उसको हम देते हैं नंबर वन. और उसके बाद जो जहाँ से वो शुरू होते हैं ग्रुप आइटम जैसे नेम, ठीक है, तो नेम को लेवल नंबर दिया हमने 2. We have given 2 as a level number. If it is a group item and if it has some elementary item, तो elementary items को number दिया 3. Okay, तो सबको same number है. अगर फर्स्ट नेम में भी कुछ डिवीजन होता तो उस डिवीजन को फोर्थ नंबर मिलता. फर्स्ट नंबर के भी अगर 2 पार्ट होते तो उनका लेवल नंबर क्या हो जाता. ठीक है, सो दिस वे वी हैव टू गिव द लेवल नंबर्स. राइट, सो जेंडर है तो अगेन सी वी हैव टू सी फर्स्ट ऑल द नॉर्मल फील्ड्स. ये जो है ये सब, इन सबको नंबर 2 है क्योंकि ये हमारे एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं: नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर. ठीक है, मेन फील्ड.
फिर we have to see whether they are further divided or not. If they are dividing into elementary item, so all those elementary numbers will be next number, that is 3. जैसे name का input दिया 3, here also it is 3 and here also it is 3. So this way we have to give level number instead of natural ordering. So these are the two main difference between array and record. In array you have sequence or normal ordering, natural ordering, and in case of record you have level number. Okay, and in case of record you can store any type of data, but in case of array you can store only homogeneous type or same type of data. So these are two main differences that you can write when it is there in your exam. Write the difference between record and array. उसके बाद how you are accessing the record. जैसे मैंने एक simple example लिया. This you have employee 30. Employee is your entity and 30 means you have stored 30 employees record. तो अब मुझे अगर थर्ड एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, तो हाउ डू आई राइट एम्प्लॉय 3 dot name dot first name. So this way I am able to access the first name or the elementary item with the help of dot operator. So this way I am able to access the third record, third employee, and by first going into its first field name and further its elementary field with the help of dot operator. So this is all about record, a very simple or very easy concept related to record कि कैसे record में store होता है और कैसे record represent होता है. For that we have level numbering. ये जो main attributes है that is the next level. जो entity है उसको first level, जो main attributes है उनको second level, and further if that any attribute is divided into elementary item, the next level number to those elementary items. Understood? Next is सेम इसी पे ही इजी है कॉन्सेप्ट. डिफरेंस बिटवीन तो हमने ये पढ़ लिया. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड लीनियर एरे. इन केस ऑफ record it is a collection of field and the array is list of homogeneous data element. A record can contain non-homogeneous data and array should contain homogeneous data. In record, natural ordering of element is not possible where the array is having naturally ordered. Elements of records are referred by level number and arrays are referred by index number. So these differences you can write by writing difference between array and record. उसके बाद एक और वेरी सिंपल एग्जांपल इसमें आता है क्वेश्चन में, हाउ टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड इन मेमोरी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग रिकॉर्ड इन मेमोरी. तो जब आप रिकॉर्ड को मेमोरी में स्टोर करते हो, देन फॉर ईच एलिमेंट्री आइटम, आई एम रिपीटिंग, for each elementary item you need an independent array. So you need parallel arrays for each and every elementary item of your record. अब यही एग्जाम्पल मैंने लिया कि एम्प्लॉय इज द एंटिटी. तो सेकेंड से जितने भी नंबर हैं दैट इज योर ग्रुप आइटम्स, राइट. तो ग्रुप आइटम्स में अभी जैसे मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया, एड्रेस में सिटी और पिन कोड लिया एंड मोबाइल नंबर, मैंने डेट ऑफ बर्थ हटा दी जस्ट टू गिव सिंपल एग्जांपल. तो अभी इसमें कितने पैरेलल एरेज बनेंगे? नेम का एरे नहीं बनेगा क्योंकि वो ग्रुप आइटम है. ग्रुप आइटम का we will not make array, we will make the array for its elementary item. So for name we need two parallel arrays for first name and last name like this. ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम. ओके, एंड जेंडर का एक array बनेगा. Then address again it is further divided into two elementary items. So उसके लिए
होगा यहाँ पे, तो उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका जेंडर, उसकी सिटी, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर। तो मैं जैसे एक्सेस कर रही थी एम्प्लॉय थर्ड थर्ड का फर्स्ट नेम, तो मुझे कैसे एक्सेस करना था फर्स्ट नेम, तो हम थर्ड रिकॉर्ड पे जाएंगे, नेम पे जाएंगे और फर्स्ट नेम इंडिविजुअली एक्सेस करेंगे। If we will name the array, then उसमें हम how we will store first name and last name. So that should be very much clear to you that when you are going to store record in memory, then based on your elementary fields in the record, you have that many parallel arrays. Understood? So in this case, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 elementary items. Alright, so we need 6 parallel arrays to store our record. तो जब भी हमें कुछ एक्सेस करना होगा तो हम पूरे के पूरे उन सब arrays को एक साथ चला के we can access that value. Clear? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, हाउ टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड इन दी मेमोरी। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चन, और ये इतनी बार आया हुआ है क्वेश्चन कि यू हैव गिवन मतलब ए कंबाइंड क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड इन द मेमोरी एंड रिप्रेजेंट 3 रिकॉर्ड्स विद 3 फील्ड्स। तो आप 3 फील्ड मतलब आपके पास 3 ही फील्ड चाहिए, तो हमने एक नेम ही सिंगल फील्ड ले ली कि वो एलिमेंट्री आइटम कंसीडर करके एक एड्रेस ले लिया और एक फ़ोन ले लिया और 3 स्टूडेंट्स के नाम उसमें या 3 पर्सन के नाम उसमें स्टोर कर दो। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 3 records in 3 field. You have 3 field: name, address, phone, and 3 records: Parth, Shriniket or Yash. Right? So this is very simple expression in your exam. Understood? So